We have looked into the shear modulus and the bulk modulus and some other elastic properties, just the relationship. For isotropic materials, materials that have same behavior in all directions, same properties in every direction, you can relate the shear modulus with the Young's modulus using the Poisson's ratio. Similarly, you can relate the bulk modulus to the Young's modulus using the Poisson ratio using the relationships shown to you. And you are all familiar with what is Young's modulus, shear modulus, bulk modulus, and the Poisson's ratio. Some other relationships in a simple tensile test, the deformation is essentially represented with force, original length, Young's modulus, and cross-sectional area. How do you get that? You know that engineering stress is basically Young's modulus is basically engineering stress over engineering strain, and stress is basically force over area, and the strain is basically change in length divided by original length, which is delta. So you have this relationship. Now, if you rearrange the relationship, you essentially would have deformation is force multiplied by L naught and A multiplied by the Young's modulus, the same relationship you have over here. All right. And another relationship that you have is that of Poisson's ratio, which is negative of lateral strain divided by the longitudinal strain. Lateral strain is deformation Yes, along sir. the lateral. G. Strain is change in diameter. Strain is change in diameter or strain is change in length over original length. What was the first class? Lateral strain is change in diameter. Lateral Lateral strain strain. is change in width. Okay, sir. All right. All right. Depending upon how your sample is it a dumbbell shaped sample or a flat sample? It is the change in the width of the sample. So deformation along this direction, this is change along this direction is lateral deformation divided by the original length along this direction, which is the width of the sample. All right. Clear? Yes, sir. And the longitudinal strain is essentially deformation divided by original length. So this deformation divided by the original length. Clear enough? Yes, sir. So you can essentially use this and this length. I will let's say choose a different color. You can use these two values which are given over here and replace them. So if I bring this over here, I would essentially have deformation, longitudinal deformation divided by L naught, which is the longitudinal strain. So I can replace this longitudinal strain by negative V over lateral strain. And lateral strain is what? It is lateral deformation divided by width. So I can essentially have this being represented by minus V lateral strain divided by width of naught is equal to F over E A naught. And I can have the lateral strain is equivalent to alright, so you could have this as 1 over V and this would be over here. So you could have negative V F sorry you could have the expression
you could have the expression minus EL is equals to V lateral longitudinal strain, and longitudinal strain is equivalent to minus EL over V, and minus EL over V could be, so this could be expressed as L over W naught V. This is the relationship that you could have. So over here in this relationship, you can replace epsilon with this expression. Epsilon is essentially force over E into A naught minus lateral strain over W naught V is F over E A naught, and you can replace it with this expression over here which says that your lateral strain is basically dependent upon the Poisson's ratio, the width of the sample, force, E and A naught. Is this clear to you guys? Yes, sir. All right. Now, if we look at whether this relationship or this relationship, the deformation in the material, whether it is the longitudinal deformation or whether it is the lateral deformation, it is dependent upon three things. The material would define the Young's modulus, or the Young's modulus would be defined by the material. The geometric parameters, which is the length and the cross-sectional area, and the loading conditions, which is the force acting on the material. They all contribute towards the deflection in the material. And the higher the Young's modulus, higher would be the Young's modulus, lesser would be the deflection in the material. Excuse me. So larger elastic moduli would minimize the elastic deformation in materials. All right. Moving on towards the maximum principal and shear stresses and planes of maximum principal and shear stresses. So if you have this sample and there is stress acting, biaxial stress acting on the material, sigma x and sigma y, if you take any small element on this material, the same stress would be acting on this small element, sigma x and sigma y. तो अगर मैं इसमें से छोटा सा कोई सैंपल ले लूँ, ये सैंपल बाहर निकाल लूँ, तो उसमें भी सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई एक्ट कर रहा होगा. स्मॉल एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कंपोनेंट. So let us focus on an element. Principal planes कौन से होते हैं? Principal planes are the planes on which only normal stresses act. Shear stress act नहीं कर रहा होता. तो principal planes वो होते हैं जिसमें stresses जो है वो सिर्फ normal stresses act कर रहे होते हैं. That means stress is acting normal to the surface. There is no shear stress or stress acting along the surface. Is this clear to you guys? How do you define the principal planes? ये चीज क्लियर है? Yes, sir, समझ आ गई है. All right. And if you have two planes on which the principal stresses are acting, like sigma x and sigma y, the larger would be known as major principal plane, and the larger stress would be known as major principal stress acting on major principal plane, and sigma y would be known as minor principal stress acting on minor principal strain. The other principal plane. Principal stresses. Let us have a look at this. ये example है in which there is two stresses acting, sigma x and sigma y, biaxial stress strain. So अगर मैं इसको 2D में देखना चाहूँ, I take out this plane. अगर मैं ये plane बाहर निकाल लूँ, and if I want to have a look in 2D, there is sigma x acting in this direction and sigma y acting in this direction. Now, sigma x is equivalent to sigma 1 and sigma y is equivalent to sigma 2. Is there any shear stress acting on this plane?
No, sir. All right. So principal stress is a normal stress which acts on principal plane. Sigma 1 to sigma 1 is major principal stress and sigma 2 is minor principal stress. इस केस के अंदर sigma 1 would be equivalent to sigma x and sigma 2 would be equivalent to sigma y. Sigma 1 is the maximum principal stress, sigma 2 is the minimum principal stress, and they would be equivalent to sigma x and sigma y. Why? Because there is no shear stress acting on this surface. Now, if I have the same surface and there is shear stress also acting on this surface, यहाँ पे भी shear stress act कर रहा है. Now, you are not looking into 2D, you are not looking into 3D. 3D नहीं है, मैं 2D में ही define कर रहा हूँ आपको. So, you have shear stress acting and shear stress is equal on all the planes. यहाँ पे भी act कर रहा है, यहाँ पे भी act कर रहा है और यहाँ पे भी act कर रहा है. Now, can you say sigma y is equal to sigma 2 which is the minor principal stress or sigma x is equal to sigma 1? कह सकते हैं आप? Yeah, I think so, sir. कंडीशन क्या थी? So, can you, Principal planes या principal stresses are those stresses where no shear stress is acting. आप किसी स्ट्रेस को प्रिंसिपल स्ट्रेस तब कहेंगे या किसी प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन तब कहेंगे जब उसके ऊपर shear stress एक्ट नहीं कर रहा होगा. Only normal stress is acting. Alright? Yes, sir. yes, sir, got it. तो ये Alright. सर प्रिंसिपल प्लेन नहीं होगा. नहीं होगा ये. Very good. So which plane is the principal plane then? अगर ये plane principal plane नहीं है तो फिर कौन सा plane है? Not the one which have shear stress acting on the plane. वो plane तो principal plane नहीं हो सकता. Principal plane will be at an angle alpha to the vertical plane such that on principal plane shear stresses would be zero. So होगा ये कि ये कोई प्लेन है, there is a certain plane at an angle, इस एंगल के ऊपर there is a certain plane at an angle alpha जिसके ऊपर जो सिग्मा y और टाउ के कंपोनेंट है they would cancel out और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा होगा. Alright? Is this point clear to you guys? Yes, sir. बॉडी के ऊपर this is your body and on this body there is this acting, this is shear stress and this is sigma x. Now at a certain plane, इस बॉडी में कोई certain plane होगा जिसके ऊपर for this plane जो shear stress act कर रहा है वो zero हो जाएगा and you only have normal stress acting on the on that plane और वो plane जो है that is at an angle alpha. So in that सर case सही है shear जी जी सही है shear stress जीरो होने का मतलब है कि इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा. जी क्यों जो क्या? जी 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 जो सिग्मा y है उसका जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा that would cancel out shear stress, so essentially you would only have the normal stresses acting on the surface. Clear? Yes, sir. Yes, sir. So for an angle alpha, the plane which is at angle alpha is the principal plane, and on this principal plane sigma 1 would be the maximum principal stress while sigma 2 is the minimum principal stress, but these two stresses would not be equal to sigma x and sigma y. Clear enough? Sigma x and sigma y are not the principal stresses in this case. Sigma 1 and sigma 2 would be different than sigma x and sigma y. Sigma 1 and 2 represent principal stresses. Sigma x and sigma y, they are representing the stress that is being applied on the material. Clear?
Yes, sir. All right. So maximum and minimum normal stresses, which is principal stresses, the condition is shear should be zero and it occurs 90 डिग्री apart. यानी कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो है इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल होगा. अगर सिग्मा 1 इस प्लेन पे एक्ट कर रहा है तो सिग्मा 2 इस प्लेन पे एक्ट करेगा. क्लियर इनफ? Yes, Yes, sir. sir, got sigma 1 and sigma 2 दूसरे प्लेन पे एक्ट करेगा. जी जी. Now, what is the importance for it? Significance of principal stress. What is the significance of principal stress? Significance ये है कि brittle material will not fail by shear force. It will only fail due to the maximum principal stress sigma 1. And sigma 1 is much greater than sigma x. अगर मैं यही इमेज रखूं यहाँ पे तो sigma 1 is the maximum principal stress and it is greater than sigma x. क्लियर इनफ? ये बात समझ में आ रही है? यस सर, एक बार फिर से रिपीट कीजिए. देखिए इस सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है वो क्या है? सिग्मा एक्स एक्ट कर रहा है. यस सर. Yes, sir. और सिग्मा 1 जो है वो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होता है ना जब शीयर से जीरो होता है. इसको प्रिंसिपल स्ट्रेस हम यस इसीलिए सर. कहते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू होती है नॉर्मल स्ट्रेस की. क्लियर और नॉट? Yes, यस sir. सर, Clear गॉट. है. तो सर सिग्मा 1 सर की आपने कहा वैल्यू. था कि ये जी सॉरी. सर आपने कहा था कि ये जो प्रिंसिपल स्ट्रेस हमने निकाला ये उसका रिजल्टेंट है, ये शेयर स्ट्रेस और दूसरे स्ट्रेस का रिजल्टेंट है. अच्छा सर रिजल्टेंट में एक कंपोनेंट कम हो रहा है उसका दूसरे को कैंसिल करने के लिए, तो ये कम नहीं होगा सर उससे सिग्मा 1? इसकी वजह से भी रिजल्टेंट आएगा, इसकी वजह से भी रिजल्टेंट आएगा और टाउ की वजह से भी रिजल्टेंट आएगा. ये एंगल पे है ना. अगर ये आपका ओरिजिनल प्लेन था, ये आपका कोई और प्लेन आ रहा है तो इस प्लेन के नॉर्मल ये स्ट्रेस है और ये जो स्ट्रेस नॉर्मल बन रहा है विच इज सिग्मा 1, इट इज डिपेंडेंट अपॉन दिस स्ट्रेस, it is dependent upon this stress and it is dependent upon the shear stress. Clear? यस सर, उसमें लगी रिजल्टेंट है सर. Right? तीन का रिजल्टेंट है जो कि कन्वर्ज हो रहा है सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस में. इस प्लेन पे सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस पे कन्वर्ट हो रहा है. क्लियर? यस सर, सिर्फ एक डायरेक्शन में स्ट्रेस लगना चाहिए प्रिंसिपल. जी सॉरी. प्रिंसिपल के लिए सिर्फ एक डायरेक्शन में होना चाहिए सर, मतलब 90 डिग्री पे और एक डायरेक्शन में होना चाहिए. जी नॉर्मल टू द सरफेस होना चाहिए. 90 डिग्री पे तो दोनों का डिफरेंस होगा और ये इस पे shear स्ट्रेस एक्ट नहीं करेगा. अगर मैं ये आपको ये डायरेक्शन दिखा रहा हूँ ना, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लूँ, एज अ सरफेस ड्रॉ कर लूँ तो इसके अलोंग दिस फेस कोई स्ट्रेस नहीं होगा, इसके नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा होगा. क्लियर? यस सर, समझ. प्रिंसिपल स्ट्रेस आप सिर्फ उस वक्त कहेंगे जब स्ट्रेस किसी प्लेन पे सिर्फ नॉर्मल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा हो, shear स्ट्रेस ना हो. क्लियर? यस सर. तो सिग्मा 1 जो है which is the stress acting normal to this surface, it is the maximum stress that the material would bear in the normal direction. Clear? यस सर. यस सर. यस सर. And this would be greater than sigma x. Yes, no? सर ज्यादा ही होगा. So the material brittle fracture will take place along what direction? Along the maximum principal plane on which sigma 1 is acting. So material fail होगा along this direction जिसके ऊपर maximum normal stress which is the principal stress would be acting. Clear enough? यस Yes, सर. sir. यस सर. ये brittle materials के लिए.
सो ब्रिटल मटेरियल्स के लिए डिजाइन क्राइटेरिया क्या होता है? वी नीड टू कंसिडर द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द मटेरियल टू डिजाइन फॉर ब्रिटल मटेरियल्स. Clear enough? Yes, sir. All right. How ductile materials fail? Ductile materials, they fail by the shear. So the plane of maximum shear is 45 degrees to the principal plane. हमने ये देखा कि जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है is defined by the principal stress. और मैक्सिमम shear जो है वो एक्ट कर रहा होता है at 45 degrees to the maximum principal stress plane. और प्रिंसिपल प्लेन के 45 डिग्रीज पे जो प्लेन होगा that would have the maximum shear stress. All right, is this clear to you guys? ये बात क्लियर हुई है? Yes, no? सर ठीक है Yes, सर. sir. ठीक है या नहीं ठीक है? अगर ठीक नहीं है तो लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. नहीं सर समझ आ गई अब वो. देखिए, you have this yellow plane as the principal plane. प्रिंसिपल प्लेन वो है जो कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया सर जिसमें जी जी. सर कलर आप चेंज कर दें अगर पॉइंटर का तो ज्यादा बेहतर है। ऑलराइट. सो ये प्रिंसिपल प्लेन है. प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होता है जिसके ऊपर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा होता है और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस जिस प्लेन पे एक्ट कर रहा हो वहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस होता है नॉर्मल. क्लियर? सो प्रिंसिपल प्लेन हैज मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस. If you can find out that at this angle you have the principal plane 45 degrees to this plane, you would have another plane जिसके ऊपर shear stress would be maximum. All right, ये चीज क्लियर है? यस सर यस सर क्लियर। सर 45 में उसके ऊपर शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा. जी. So shear failure takes place along the plane of maximum shear. Brittle materials कहाँ पे fail होते थे? They used to fail along the plane of maximum normal stress या के plane which is known as the principal plane. और जो shear जो ductile materials हैं वो fail कहाँ पे होते हैं? They fail along the maximum shear planes, the planes at which the maximum shear force is acting. So अगर मैं ये कहूँ कि जो shear stress act कर रहा है मटेरियल के ऊपर, this is not the maximum shear stress acting on the material. Actually, the maximum shear stress is acting at this plane within the material. So T max is greater than the shear stress acting on the material. You have to design on the basis of T max shear stress, not T. ये हम मटेरियल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि मैक्सिमम shear stress मटेरियल में इस प्लेन के ऊपर एक्ट कर रहा है. So you have to design based on this maximum shear stress. Clear enough? यस सर आप क्लियर है। So in ductile materials, अगर हमारे पास ये टेंसाइल का सैंपल है and we are stretching it in this direction, so हमारा नॉर्मल प्लेन कौन सा हुआ? ये प्रिंसिपल प्लेन कौन सा हुआ? The plane at which only normal stress is acting, कौन सा प्लेन है वो? तो जिन दो पे स्ट्रेस देखिए ना, if I have this sample with me and I'm stretching in this direction, और इस डायरेक्शन में भी स्ट्रेस लेट्स से सिग्मा y is 0 and sigma x has some value. मुझे ये बताएं कि मेरा नॉर्मल स्ट्रेसेस मैक्सिमम कहाँ पे होंगे, किन प्लेन्स पे होंगे?
ये मेरे प्रिंसिपल प्लेन्स कौन से होंगे जिसपे shear स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रहा? प्रिंसिपल प्लेन्स तो वही होते हैं ना जिन पे shear स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रहा होता, तो इस केस में कौन से? सर यही नहीं हो गया एज इट इज? एज इट इज यही यस होगा सर, ना, वर्टिकल प्लेन। यही यस सर, प्लेन यही होगा होगा। बेसिकली, ऐसे ही है ना? जी This sigma x would become my sigma 1, sigma y would become my sigma 2. Is this or not? बिल्कुल सर, वो एक जीरो है, दूसरा उससे ज्यादा है, तो वही। वेरी गुड। अच्छा, नाउ इस प्लेन के 45 डिग्री पे कौन सा प्लेन होगा? यहाँ पे कोई प्लेन होगा ना, ऐसे करके कोई प्लेन दिया, चलो मैं ऐसे ड्रॉ कर लूं, ऐसे प्लेन्स होंगे जो 45 डिग्रीज पे होंगे। जी सर। ऑलराइट, तो 45, अगर प्रिंसिपल के 45 डिग्रीज पे जो प्लेन होगा, दैट वुड हैव द मैक्सिमम शेयर। shear stress. क्लियर है? ये चीज क्लियर है? जी सर। Alright. So now if you look at this tensile sample जो कि इस डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहा है, डेफॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? 45 डिग्रीज पे। ऑलराइट, अल्टीमेटली फेलियर भी ऐसे ही हो, नेक यहीं पे 45 डिग्रीज पे बनना शुरू होती है एंड इट अल्टीमेटली फेल्स। फ्रैक्चर टेक्स प्लेस एट shear एंगल विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड स्ट्रेस। तो ये ऐसे 45 डिग्रीज के ऊपर क्रैक्स जनरेट होते हैं और अल्टीमेटली मटेरियल फेल्स एट 45 डिग्रीज। क्लियर? ठीक हो गया सर। ठीक है सर। All right. Again, if you have, let's change the color. If you have sigma y, sigma x, and shear stress acting on a material, how do you find out the sigma 1 and sigma 2 and tau max? ये हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि सिग्मा 1 एंड 2 could be found out depending upon sigma x and sigma y and the shear stress acting on the material. And maximum shear को find out करने का तरीका ये है कि it is dependent upon sigma x, sigma y and tau. So that this is the way you could find out sigma 1, sigma 2 and tau max for a material. Clear enough? सर जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है सर, वो तब होता है ना जब क्या कहते हैं, शीयर स्ट्रेस जीरो। जी बिल्कुल। तो सर ये इक्वेशन में फिर उसको हम डाल क्यों रहे हैं अगर उसको जीरो ही होना होता? क्योंकि इसके इफेक्ट की वजह से है ना, ये तीन स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं बॉडी के ऊपर। ऑलराइट, इन तीनों स्ट्रेसेस की कॉम्बिनेशन की वजह से सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की कोई वैल्यू आएगी। तो आपने इन तीनों को अकाउंट करना है, तो फिर आपको सिग्मा 1 सिग्मा 2 मिलेगा। क्लियर है? सही से। ठीक है। सिग्मा, ये चीज याद रखिएगा, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, दे आर नॉट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन दिस केस। ऐसे ही है ना? यस सर, वो नॉर्मल। ठीक है। क्योंकि जिस सरफेस पे वो एक्ट कर रहे हैं उस पे shear स्ट्रेस भी एक्ट कर रहा है। बट इनकी वजह से सर हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आ जाएंगे जी, लेकिन इनकी वजह से हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू आ जाएंगी। हाँ जी, आपके पास इन तीन स्ट्रेसेस की वजह से सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू आ सकती है, और इसी तरह सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और shear स्ट्रेस की मदद से आप मैक्सिमम shear स्ट्रेस यू कैन फाइंड इट आउट। ऑलराइट, last part is resist hardness, which is resistance to permanently indenting the surface. Large hardness means greater resistance to plastic deformation in compression and better wear properties. So how do you measure the hardness? You apply a known force. ये बॉल होती है, स्टील की बॉल होती है, having a specific diameter, and you apply this force on the material, and the indent, the size of the indent would give you or would reflect the resistance of the resistance of the material. So measure size of indent after removing the load. You apply certain load, then you remove the load and you measure the size of the deformation. Smaller the indent means larger the hardness of the material or larger the
resistance of the material to indentation. Again, this hardness of the material is essentially a surface property. It is a property of the surface of the material. And how does the hardness change? For plastics, you would have low hardness. Brass, aluminum alloys, greater. Easy to machine alloys, much greater. Files, which are hard, they have high hardness. Cutting tools, much harder. Nitrided steels and diamond, they would have the highest hardness. So hardness is increasing in this direction. All right. Yes, sir. All right, great. So this brings us to the end of chapter on mechanical properties.